Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. OPSC PGT रो पिला माने पेपर 1 जहा कि कंपलसरी पेपर रही सब सब्जेक्ट रो जहा हमें आलोचना करबा आज रो क्लास रे। तो एथिरे जनरल इंग्लिश रो रही 50 गोटी प्रश्न आउ जनरल नॉलेज रो रही 50 गोटी प्रश्न माने सर्वमोट 100 गोटी प्रश्न एथिरे रही। तो आज ये 100 गोटी प्रश्न रो कोन रही उत्तर अनऑफिशियल आंसर कि जहा कि आपण माने कहि पारबे। तो एगुडी को सब प्रश्न रो उत्तर कोन रहइबो से गुडी आलोचना करबा। तो पिला माने समस्ते आपण मानकर प्रश्न पत्र सहित ए उत्तर को मिलै दियंतु कहार केते स्कोर होउछ बोली। ठीक अछि, ताहले जनरल इंग्लिश रो प्रथम प्रश्न हेउछि दैट he was a scholar was not known to anybody. This is an example of एरा करेक्ट आंसर हेजिबो ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सी हेजिबो पिला माने एरा सठिक उत्तर समस्त मिलै दियंतु पिला माने। ठीक अछि, 2 नंबर प्रश्न चूज द करेक्ट सेंटेंस एरा सठिक उत्तर कोन ना एहार सठिक उत्तर होउछि सी ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव हिज गोल्स। 2 नंबर रो मध्ये सी होउछि सठिक उत्तर। 3 नंबर प्रश्न रहिछि ए पर्सन हु बर्न्स द मिडनाइट ऑयल इज that correct answer is D. Laborious is the correct answer. 4 रो कोन रहिछि ना in the sentence he went home the word home is 4 नंबर सठिक उत्तर हेजिबो adverb home होछि एटा कोन ना adverb रहिछि बी होछि यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न the man died यार सठिक उत्तर कोन हेजिबो the man died from a snake bite from a snake bite बी हेजिबो पिला माने सठिक उत्तर from a snake bite हेजिबो। 6 नंबर प्रश्न द पैसेज डील्स विथ द इफेक्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन ऑन यार सठिक उत्तर टीनेजर्स सी हेबो यार सठिक उत्तर टीनेजर्स हेजबो सठिक। 7 नंबर प्रश्न द स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन दोज हु वेयर यार सठिक उत्तर विलिंग टू कोऑपरेट ए हेबो यार सठिक उत्तर। 8 नंबर प्रश्न द इफेक्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन ऑन द ब्रेन्स इज करेक्ट आंसर इज कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होची बी होची यार सठिक उत्तर। 9 नंबर प्रश्न द रिसर्चर्स हैव कंपेयर्ड इंटरनेट एडिक्शन टू ड्रग्स बी हेजबो यार सठिक उत्तर पिला माने। 10 नंबर प्रश्न द इंटरनेट एडिक्शन इंपेयर्स द पावर ऑफ रीजनिंग सी हेबो यार सठिक उत्तर रीजनिंग हेजबो सठिक उत्तर। 11 नंबर प्रश्न होची वन एडिक्टेड टू इंटरनेट मे बिकम ए लायर सी हेजबो यार सठिक उत्तर। ऑनलाइन एक्टिविटी may affect food habit हेजबो फूड हैबिट को। इंटरनेट एडिक्शन इज डेंजरियस व्हेन इट अफेक्ट्स पीपल इन देयर फॉर्मेटिव इयर्स डी हेबो यार सठिक उत्तर फॉर्मेटिव इयर्स। द स्टडी वाज बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स फ्रॉम ए जियोग्राफिकल रीजन दैट इंक्लूड्स यार सठिक उत्तर कोन हेबो ना चाइना सी हेजबो यार सठिक उत्तर पिला माने चाइना। न्यूरल इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ नर्व सी हेबो यार सठिक उत्तर नर्व हेजबो यार सठिक उत्तर। 16 नंबर प्रश्न होउछि द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज इंप्लाइज दैट कलकत्ता वाज सेकंड ओनली टू नर्व ओनली टू यार सठिक उत्तर कोन हेजबो यार सठिक लंडन यार सठिक उत्तर हेजबो लंडन। 15 नंबर होउछि नर्व 16 नंबर होउछि लंडन डी उत्तर। 17 नंबर प्रश्न बेंगल रेनेसांस इंप्लाइज ए कंपैरिजन with a European phenomenon बी हेजबो यार सठिक उत्तर पिला माने ए यूरोपियन फेनोमेनन। 18 नंबर प्रश्न प्रोफेसर सुसोभान सर्कर्स attitude towards the use of the term Bengal Renaissance was one of यार सठिक उत्तर कोन हेजिबो ना यार सठिक उत्तर पिला माने ए हेजिबो सठिक उत्तर अप्रूवल हेजिबो यार सठिक उत्तर। According to the author, the British and the local traditions impacted each other. The Royal Asiatic Society of Bengal कोन रहिछि प्रश्नटी रो सठिक उत्तर ना promoted the study of ancient Indian text एही जे सठिक उत्तर। The passage says that the British administration established the rule of law 21 रो होची ए सठिक उत्तर। द उसर इज टू यार सठिक उत्तर कोन हेजिबो ना सो इन सी हेबो यार सठिक उत्तर। प्लाउजिबल मीन्स कोन रहिछि ना यार मीन्स रीजनेबल डी हेबो यार सठिक उत्तर रीजनेबल। 24 नंबर प्रश्न द वर्ड रेडिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम रूट radical word is derived from root
In the passage, the author's attitude towards the British administration is एहार सठिक उत्तर हो appreciative भी है एहार सठिक उत्तर appreciative. The proof of the pudding is in the eating भी है एहार सठिक उत्तर eating हो. A bird in the hand is worth 2 in the एहार सठिक उत्तर कौन हो ना बस डी हो एहार सठिक उत्तर पिला माने. 28 नंबर प्रश्न penny wise pound 28 नंबर सठिक उत्तर हो foolish डी हो एहार सठिक उत्तर. One swallow does not make a summer. The candidate is racing dash time. The candidate is racing against time. Against C है एहार सठिक उत्तर. John is the legitimate heir dash his father's property to his father's property. भी है एहार सठिक उत्तर पिला माने. 32 नंबर प्रश्न the judge was averse dash capital punishment. 32 नंबर सठिक उत्तर होची 2 capital punishment. Hard toil is telling dash his health. Hard toil is telling on his wealth, on his health. ये है सठिक उत्तर. The opposite of pain is pleasure. Pain नो opposite कौन रही pleasure रही. The opposite of placid is placid रो opposite कौन है turbulent है यार सठिक उत्तर सी है सठिक उत्तर पिला माने. Detrimental is synonymous with harmful सी हो सठिक उत्तर harmful है. Moribund means what is the meaning of moribund? Moribund mean almost dead. Tardy means कौन रही tardy means हो slow हो यार सठिक उत्तर. The word miserly is यार करेक्ट आंसर कौन ना adjective. यहाँ हो एक adjective पिला माने. 40 नंबर प्रश्न he cannot succeed unless he works hard. Despite failure he यार सठिक उत्तर कौन हो has not lost heart यही जो पिला माने यार सठिक उत्तर. 42 नंबर प्रश्न the army is capable ताहले यार सठिक उत्तर कौन हो ना of winning the battle भी हो यार सठिक उत्तर. The past participle form of flow is केउंडी करेक्ट उत्तर हो ना flowed भी हो यार पिला माने सठिक उत्तर. परवर्ती प्रश्न morbidity suggest the correct answer is disease. The word to which a relative pronoun refers in a sentence is called correct answer is antecedent. The adjective form of prosper is यार करेक्ट उत्तर कौन हो ना prosperous डी हो पिला माने यार सठिक उत्तर. The word used to indicate a group of girls is बेभी हो यार सठिक उत्तर सी हो पिला माने सठिक उत्तर. परवर्ती प्रश्न हो इन इंग्लिश ग्रामर माइट इज मोडाल वर्ब सी हो यार सठिक उत्तर मोडाल वर्ब हो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट 49 नो सठिक उत्तर हो बी यू अर्जुन एंड आई वेंट टू सी द मैच. परवर्ती प्रश्न इंग्राजी रो शेष प्रश्न रही पिला माने इंग्लिश रो चूज द करेक्ट सेंटेंस यार सठिक उत्तर हो द टाइगर हैज लॉस्ट इट्स ऑफस्प्रिंग सी हम यार सठिक उत्तर पिला माने. यह हूँ इंग्राजी पिला माने 50 गोटी प्रश्न इंग्लिश प्रश्न गुड़ी समस्ते मिले दिंतु आंसर की सहित ठीक अच्छे. तो जनरल नॉलेज जो 50 गोटी प्रश्न रही यार आंसर की समस्ते भल भाव टे मिलदेवे. तो 51 नंबर प्रश्नटी हूँ हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर यार सठिक उत्तर हो सी चंद्रगुप्त 1. The Battle of Plassey was fought in which year? Correct answer is 1757. Who was the first Indian ruler to accept the subsidiary alliance offered by Lord Wellesley? यार correct answer कौन हो ना Nizam of Hyderabad. Who was the Mughal emperor during the revolt of 1857? 54 correct answer हो C Bahadur Shah 2 हो यार correct answer. 55 हो which movement started with the Dandi March started कितला कौन civil disobedience movement ये ही सठिक उत्तर पिला माने. Who among the following was not associated with the formation of the Indian National Congress यार सठिक उत्तर होची बाल गंगाधर तिलक. In which year was the Vernacular Press Act passed? यार correct answer होची 1878.
which ruler is known as the Napoleon of India? यार करेक्ट आंसर होउछि पिला माने समुद्रगुप्त डी होउछि यार सठिक उत्तर समुद्रगुप्त द Montagu Chelmsford reforms were introduced in which year? The correct answer is 1919 B हिजबो सठिक उत्तर was the viceroy of India during the Jallianwala Bagh massacre यार सठिक उत्तर होउछि पिला माने लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये होउछि यार सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न which is the largest salt water lake in India? Correct answer is Chilika Lake B होबो यार सठिक उत्तर पिला माने Chilika Lake is the largest salt water lake in India. Which river is also known as the Dakshina Ganga? यार सठिक उत्तर कोन हिजबो यार सठिक उत्तर होउछि गोदावरी बी होउछि यार सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि द अराइवल रेंज इज लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया द करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न इंडिया प्लान इन व्हिच स्टेट इज द केबुल लामाजाओ नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन मणिपुर which is the highest peak in the eastern ghats correct answer is Arma Kunda which Indian state has the longest coastline correct answer is Gujarat B होबो correct उत्तर what is the approximate area of India in square kilometers 67 no correct answer होउछि पिला माने 3.28 million square kilometer The Narmada river flows through which of the following mountain range? The correct answer is C. Satapura range. Which state in India is known as the land of 5 rivers? यार correct answer है जो पिला माने पंजाब ये है जो यार सठिक उत्तर पंजाब. Next question is which is the largest river island in the world located in India? The correct answer is Majuli. Which state is the leading producer of coffee in India? Is the correct answer Karnataka. 72 question which river originates from the Amarkantak plateau? Correct answer is Narmada river. Which Indian state has the highest literacy rate according to the 2011 census? 73 the correct answer is Kerala. Which river is known as the lifeline of Madhya Pradesh? 74 correct answer is Narmada. In which Indian state is the Thar desert located? Correct answer होउछि Rajasthan. Which scientist discovered the radioactive element radium? Correct answer होउछि पिला माने C. Marie Curie. 77 which planet in our solar system has the most moons? 77 no correct answer होउछि पिला माने Saturn. Which country is known as the land of the rising sun? 78 रो पिला माने करेक्ट उत्तर हेछि जापान ए हेबार सठिक उत्तर हु रोड द प्ले वेटिंग ऑफ गोडट यार सठिक उत्तर हेछि पिला माने बी हेजबो पिला माने सठिक उत्तर 80 नंबर प्रश्न इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज awarded is the correct answer is यार करेक्ट 1901 हिजो नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नील रिवर पिला माने नील रिवर इज द करेक्ट आंसर व्हिच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट करेक्ट आंसर इज पिला माने यार सठिक उत्तर होउछि ऑक्सीजन भी होउछि यार सठिक उत्तर Who is known as the father of geometry? Father of geometry होउछि Euclid. Who is known as the father of geometry? ये होउछि यार सठिक उत्तर Euclid. Which language is the most spoken in the world? Correct answer is English. Next question होउछि which city is known as the Big Apple? Known as the Big Apple, New York City. B is the correct answer. Next question, what is the hardest natural substance on earth? Correct उत्तर होछि पिला माने diamond. Which country hosted the first modern Olympic Games? सठिक उत्तर हेजिबो कोन ग्रीस सी हेजिबो पिला माने यार सठिक उत्तर
Which bird is the national symbol of the United States of America? यार सठिक उत्तर होच पिला माने ए ही जीवो सठिक उत्तर बाल्ड ईगल। परवर्ती प्रश्न व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सी होची कैनबेरा होची यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न व्हिच साइंटिस्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? यार सठिक उत्तर होची अल्बर्ट आइंस्टाइन। Who is the current president of the United States as of 2024? यार सठिक उत्तर होच पिला माने बी जोए बिडेन। Which country won the FIFA World Cup in 2022? The correct answer is Argentina. Next question होची 93 which country recently became the newest member of NATO? Correct answer होची पिला माने यार स्वीडन। बी होची पिला माने यार सठिक उत्तर। Which company became the first to reach a market capitalization of $3 trillion? यार सठिक उत्तर होची पिला माने एप्पल। बी होची यार सठिक उत्तर। Who won the Nobel Peace Prize in 2023? यार सठिक उत्तर होची पिला माने यार सठिक उत्तर पिला माने जहा कि ऑप्शन नाही। यार सठिक उत्तर हे जिवो नरगेस मोहम्मदी। नरगेस मोहम्मदी पिला माने ये प्रश्नटी मन रखिथांतु हु वोन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023? नरगेस मोहम्मदी जहा कि ऑप्शन ने दिया जाई नाही। परवर्ती प्रश्न वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लोकेटेड? द करेक्ट आंसर इज वाशिंगटन DC। 97 which country is not a permanent member of the United Nations Security Council? 97 रो सठिक उत्तर होच पिला माने जर्मनी। 98 क्वेश्चन होइची व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड? यार सठिक उत्तर होच पिला माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वोन द नोबेल पीस प्राइज इन 2012? यार सठिक उत्तर होची यूरोपियन यूनियन पिला माने बी होची यार सठिक उत्तर। तो परवर्ती प्रश्न शेष प्रश्न 100 नंबर प्रश्न होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रेस्पोंसिबल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स? यार सठिक उत्तर हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पिला माने यह होची OPSC PGT रो पेपर 1 नो प्रश्न जहाँकि आज 15/9/2024 रे होइथिबा परीक्षार प्रश्न सबू सब्जेक्ट रो कंपलसरी रही पेपर 1 से सब गुडकर प्रश्न पिला माने। तो जो मैंने वर्तमान पर्यंत वीडियो को लाइक करना गोटे गोटे पिला माने लाइक कर दिंतु आउ सांगसाथी मान को शेयर कर दिंतु। OPSC PGT रो जो माने समस्त परीक्षार अटेंड करिसेंते से माने मध्य माने उत्तर सहित मिले दिंतु केते कहार सठिक होइछि बोलिके। ठीक अछि समस्त सांगसाथी मान को भलो भाबरे पिला माने शेयर कर दिंतु। समस्ते ये होछि अनऑफिशियल आंसर कि अबरे सब गुडी कर उत्तर पिला माने सठिक कहा जाइछि। तो आपण माने समस्त टिके चेक कर दिंतु। जदि चैनल नुआ अछंती पिला माने चैनल टिको सब्सक्राइब कर देबे। थैंक यू एवरीवन।